Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, children, today I am going to start a new chapter, chapter 13, our water resources. So, children, as we know that water is essential for life. We need water to drink, cook food, wash clothes, and do many other things. And farmers need water to grow crops. So, that's why water is very essential for our life. Now come to the next point, sources of water. So where we get the water? So about 3/4 of the earth is covered with water. हमारी जो earth है इसका जो 3/4 part है it is covered by the water. So there are many sources of water like rain, groundwater, ponds and lakes and rivers. Clear? So come to the rain. सो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्योंकि रेन से हमें एकदम फ्रेश वाटर मिलता है तो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड फार्मर्स डिपेंड अपॉन रेन वाटर फॉर देयर क्रॉप्स. फार्मर्स जो होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर एंड ग्राउंड वाटर so much of the rain that falls seeps into the ground. दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो वो पानी जो है ग्राउंड में हमारे जो ज़मीन है वहाँ उसके अंदर चला जाता है और जिसको हम क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर. एंड हाउ वी कैन टेक आउट ग्राउंड वाटर. सो कम टू द this picture. So this is a well and the hand pumps are used to take groundwater, and we can use a tube well also to take out the groundwater and use for irrigation. Next is ponds and lakes. So an area of water surrounded by a land is called a pond. What is pond? वो area जो कि चारों तरफ से land से surrounded होता है उसको हम pond कहते हैं. And a lake is a bigger than a pond. So rainwater collects in ponds and lakes. और lake जो होती है वो pond से बड़ी होती है और rainwater जो होता है वो lakes या ponds में collect होता है. Next is rivers. So rivers that originate in the mountains that get water from the melting of snow and rain as they carry water throughout the year. So rivers that originate from that plateaus get water only from rain. They almost dry up during summer. तो rivers जो होती हैं वो कहाँ से originate होती हैं? From the mountains. How? By melting of snow and rain. Clear? And they carry water throughout the year. But in the plateau areas, they originate from the plateaus but get water only from the rain. So they almost dry up during the summer. Summers में ये dry हो जाती हैं. Next is seas and oceans. So most of the water on the earth is in the seas and oceans. However, this water is salty, so we cannot use it. जो 95% जो वाटर है वो कहाँ है? ओशियंस के अंदर. ठीक है. 90 आई थिंक हाँ 95 और 97% वाटर जो ओशियंस में है और वो वाटर कैसा है? सॉल्टी है. सो उसको हम लोग जो है वी कांट यूज इट. क्लियर? नाउ आई विल शो यू सम पिक्चर्स ऑफ दीज. सो दिस इज अ वेल एंड दिस इज अ हैंड पंप. So with the help of a well and the hand pump, we can take out the ground water. Now you can see this is a picture of lake and pond. So lake is bigger than a pond. Next picture you can see this is a river. Where from it's originate? From the mountains. And it get water from the melting of snow and rain. Now you can see this is a picture of seas and oceans, and the water of the ocean is salty, so we cannot use it. So these are the sources of water. Now come to the next, which is means of irrigation. Means of irrigation, जो farmers होते हैं वो irrigation कैसे करते हैं, अपने crops को कैसे watering करते हैं. So we will discuss with the help of these things. Okay, so to grow crops, farmers need sufficient and timely supply of water. So this is possible only through irrigation.
तो फार्मर्स जो होते हैं उनको अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन द रेन वाटर, सो जब अगर उनके क्रॉप्स को टाइम से वाटर सप्लाई नहीं होगा तो क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी. सो दैट्स वाई फार्मर्स को सफिशिएंट यानी कि जितना उनको चाहिए उतना और टाइम पे वाटर की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है. सो इसके लिए सबसे पहले इसके लिए क्या पॉसिबल है? थ्रू इरिगेशन. क्लियर? और इरिगेशन के लिए हमें क्या क्या तरीके हम लोग क्या क्या वेज हम लोग जो है अडॉप्ट कर सकते हैं. So we can use wells and tube wells, canals, tanks, sprinklers and dams. And what are these? We will discuss. Clear? So मैंने आपको well तो दिखाया था यहाँ पे. Now you can see this is a well, है ना? I will show you the tube well also. Clear? Now come to the point. So now you can see here it is a tube well, canal and tank. Okay, now we'll discuss this. So wells and tube wells. In villages, people dig wells to bring groundwater to the surface. Water is drawn using a Persian wheel. Sometimes groundwater lies at a great depth. In such a case, a deep hole is dug and a tube is sunk in the hole and water is brought up using an electric pump. So such a well is called a tube well. So they are widely used in पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात. तो गांव वगैरह जो होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है? ग्राउंड वाटर को सरफेस पे लाने के लिए जो वेल्स होते हैं वो डिग किए जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं और पर्सियन व्हील की हेल्प से उनको वाटर को ड्रॉ किया जाता है. समटाइम्स ग्राउंड वाटर लाइज एट द ग्रेट डेप्थ. कई बार बहुत गहरा भी होता है तो उसके लिए होल भी बहुत ज़्यादा डीप किया जाता है और उसमें फिर एक ट्यूब जो होता है वो उस होल में डाला जाता है और जिसकी हेल्प से या इलेक्ट्रिक पंप की हेल्प से हम वाटर को ड्रॉ ऑन करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द ट्यूब वेल. एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स वेयर आर फेमस? सो दीज आर फेमस इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात. ओके, they are widely used in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Gujarat. Now come to the canals. So in the northern and the coastal plains, small channels are dug to take water from the rivers to the fields. So these are called canals. जो northern और coastal plains हैं, northern and coastal plains हम लोगों ने पढ़े थे ना. Okay, so small channels जो होते हैं, पानी के कुछ channels जो होते हैं वो dug किए जाते हैं रिवर्स के थ्रू, रिवर के पास है, ताकि जो रिवर का वाटर वो उन चैनल्स के थ्रू जो क्रॉप्स हैं या जो भी हमारे फील्ड्स हैं वहाँ तक पहुँच सके. तो इनको हम क्या बोलते हैं? कैनाल्स. नेक्स्ट इज टैंक्स. सो इन द सदर्न प्लेट्यू द लो लाइंग एरियाज गेट फिल्ड विद वाटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन. दीज आर कॉल्ड टैंक्स. जो हमारे सदर्न प्लेट्यूज हैं जहाँ पे लो लाइंग एरिया है वो मानसून सीजन में क्या होता है, वहाँ पे वाटर फिल हो जाता है और उनको हम टैंक्स कहते हैं. सो टैंक इरिगेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. क्लियर? नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर्स. I will show the picture also of the sprinkler. Clear? So in sprinklers irrigation, water from a pipe is sprayed into the air and it falls on the plants like rain. So it is popular in Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh and Kerala. So what is sprinklers? स्प्रिंकलर क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसमें बहुत सारे पाइप लगे होते हैं. इसमें जो है वो पाइप्स ऊपर की तरफ जाते हैं हवा में और स्प्रे करते हैं. ऐसा लगता है जैसे रेन है, रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है. और इस टाइप का जो तरीका है वो एक्चुअली अडॉप्ट किया जाता है या यूज़ किया जाता है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड केरला. नेक्स्ट इज डैम्स. येस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल. Dam is a very strong wall built across a river to block the flow of water. एक बड़ी सी वॉल होती है जो रिवर के ऊपर बनाई जाती है जो वाटर के फ्लो को ब्लॉक कर देती है. सो दिस वाटर इज स्टोर्ड इन एन आर्टिफिशियल लेक. एक आर्टिफिशियल लेक के रूप में ये वाटर जो स्टोर हो जाता है और इट इज़ कॉल्ड रिजर्वर क्रिएटेड बिहाइंड द डैम, डैम के पीछे. So the stored water is taken to the fields through canals और इस water को जो stored water है इसको हम canals के through fields में पहुंचाते हैं.
सो अ डैम इज कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. डैम को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहते हैं. वाई? बिकॉज इट इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज एंड सम ऑफ देम आर. फर्स्ट, in a dam, water is made to fall from a great height. The force of falling water is used to generate hydroelectricity. जो डैम का वाटर जो होता है वो एक ग्रेट हाइट पे होता है और जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. ओके, फॉलिंग वाटर से क्या जनरेट किया जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. एंड इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड इट कंट्रोल्स फ्लड्स. तो डैम क्या करते हैं? फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं और इरिगेशन के लिए वाटर भी प्रोवाइड करते हैं. सो देयर आर मेनी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड सम ऑफ देम आर, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं या डैम्स हैं जो कि इंडिया में हैं और उनके क्या नाम हैं. तो फर्स्ट इज़ द भाखड़ा नांगल डैम built on the Satluj River, Damodar Valley project built on the Damodar River and its tributaries also. And the third one is the Sardar Sarovar Dam built on the Narmada River and the Metro Dam built on the Kaveri River. So these are some famous multi-purpose projects or dams which I discussed with you. And apart from this, so many dams in India और उनको हम लोग यूज़ भी करते हैं. इरिगेशन फॉर वी यूज़ वाटर फॉर इरिगेशन, for generating hydroelectricity, controlling floods. Clear? Okay, now I'm going to show you some pictures of means of irrigation. See, this is a tube well. In second picture you can see canal and the third one is tank. Now this is a sprinklers. Okay, sprinklers कैसे होते हैं? It has a pipe and इसको spray किया जाता है हवा में, एयर में, and it looks like a rain. Next you can see this is a dam. So now you can see here you can see in the behind the dam the water area, it is called the reservoir. Clear? This is called the stored water is called the reservoir. And in the front you can see this is a falling water. So from the falling water what we do? We generate the hydroelectricity. So falling water is used for generate hydroelectricity. So this is the dam. Clear? Okay, so now I am giving you some homework also. On page number 91, the words to know you will do in your notebook, and the read and answer question A and question B you will do in the book only. Clear? Okay, so I will meet you with my next video. So till then, take care and bye.